Hi everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. So if you are new here, then please take a moment and subscribe to my channel, and if you have already done it, then thank you so much. So in today's video I am going to review a makeup sponge which is by Blue Heaven. So this is their makeup sponge. So I got it from purple.com and the MRP of this product is 150 rupees, but I got it during sales, so it costed me around 105 rupees, which is a super duper affordable makeup sponge. So it is really hard to find this kind of such a good makeup sponge at this price. So if you like it, so you can also purchase it from purple.com, and it is easily available on Nykaa.com and Amazon also. So I'm going to provide all the purchase link in the description box, so don't forget to check out the description box as well. So let's start with the packaging. So it comes in this kind of plastic container. It's a very simple kind of packaging. So when you open it, you will get your product. So it comes in this kind of shape in purple color, and I guess इसका एक magenta color और आता है, and I know it is dirty right now because I have just used it to create this makeup look, so please avoid this dirtiness. So it has a flat end from here, so you can use it to blend out your makeup, like जो भी broad area होता है हमारे face का, especially जो आपके cheeks area है, forehead है, so easily ये जो area है आप इसकी help से easily अपने makeup को blend कर सकते हैं. And it has a pointed edge here, pointed end का end है इसमें, so you can use it to blend out your eye area and your nose area. बेसिकली जब जहाँ पर भी हम कंसीलर लगाते हैं तो वो एरिया बहुत ही कॉर्नर्स होते हैं, तो इस पॉइंटेड शेप की हेल्प से आप इजीली ब्लेंड आउट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गो टू द डेमो पार्ट. So here we have our beauty blender, and as you can see right now it is in its original size. Like generally सभी beauty blender इसी size में होते हैं. So I just quickly go and wet it. So here we have our damp beauty blender. So as you can see it has expanded this much, so it is almost doubled in size. I mean बहुत big हो गया ये size में. आपने इसका original size भी देखा था, और ये इतना ज़्यादा enlarge हो गया damp होने के बाद. So right now it is feeling so soft and squishy sponge. So it feels like कि बहुत अच्छे से blend करेगा. So I am all primed and moisturized my skin now, and for my foundation I have chosen this Maybelline Super Stay 24-hour full coverage foundation. It is a basically thick foundation because 24-hour full coverage foundation है, तो थोड़ा सा thick तो है. So let's see ये कितना blend करता है हमारे foundation को easily. So I am in the shade 128 warm nude. So I am going to take 2 pump of this foundation. So as you can see I am only bouncing it on my skin very softly. So as you can see my foundation is looking so flawless right now, and it has blended out everything so seamlessly. I mean it has done its job very nicely. बहुत ही second layer of skin की फिनिश जैसा लुक आ रहा है, जस्ट लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है. सो इसने अपना जॉब बहुत अच्छे से किया है. सो आप देख सकते हैं कि इसने अब्जॉर्ब किया है कुछ हद तक फाउंडेशन को, लाइक एवरी स्पंज डज इट. सो लेट्स अप्लाई सम कंसीलर, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस Maybelline Fit Me concealer in the shade 25 medium.
and let's blend out. So I'm so impressed with this beauty blender, and you know, most of the beauty blender has this tendency to just make a mark of a stamp, like you know, stamp जैसा एक mark बन जाता है. But आप देख सकते हैं इसने कंसीलर को भी इतने अच्छे से seamlessly blend out किया है. So I just quickly go and finish my rest of makeup, and मैं अपने final verdict के साथ आती हूँ वापस. So now it is time to say final verdict about this product. So in my opinion, it is such an amazing and nice beauty blender, and if you are a beginner and you are thinking about buying a beauty blender, so you should definitely try this one, because first of all it is supremely affordable and it has done its job very nicely. I mean, as you can see, it has blended out my foundation and concealer pretty decently, and ऐसा लग रहा है जैसे second layer of skin है मेरी. very easy to use. I mean, जैसा कि ब्रांड ने क्लेम किया था, it will double in size. So yes, it did double in size, and आप देख सकते हैं डैम्प होने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है. एंड वंस यू प्रेस इट, ये ईज़िली अपने ओरिजिनल साइज़ में दोबारा आ जाता है. एंड इसका जो ये फ्लैट एंड है, इसकी हेल्प से आप ईज़िली अपने लाइक यू नो चिक एरिया पे या फॉरहेड पे बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, एंड आप अपने बेस को अप्लाई कर सकते हैं. बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पॉइंटेड एजी पार्ट. इसकी हेल्प से मैं इतने इजीली नहीं अप्लाई कर पा रही थी आइज़ के कॉर्नर में. अदरवाइज़ आप इसकी हेल्प से अपने देख सकते हैं आप, मैंने आज अपना हाइलाइटर इसी की हेल्प से लगाया है. सो मैंने इसी की हेल्प से हाइलाइटर लगाया था, एंड आपके यू नो नोज़ के अराउंड पे आप अप्लाई कर सकते हैं. बट जैसा कि ब्रांड ने क्लेम किया था कि दैट इट विल नॉट अब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. सो एज यू कैन सी कितना सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है अभी भी स्पंज के ऊपर. येस, इट डज़ अब्जॉर्ब लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ओके. आई मीन, ज़्यादातर ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा करते हैं. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. सो फ्रॉम माई साइड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है. आई मीन, इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड दिस काइंड ऑफ beauty blender, amazing beauty blender at this price. So you should definitely try this, and I'm so happy. Actually I'm amazed right now कि इस रेट में इतना अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर कैसे मिल सकता है. सो आपको बिल्कुल ये ट्राई करना चाहिए. बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट स्क्विशी सा ब्यूटी ब्लेंडर है. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. So I hope you found this video helpful and informative. If you did so, then please give it a big thumbs up, and also subscribe to my channel, because your support would mean the absolutely world to me. Please subscribe कीजिए and try to share it with your friends and family, and also comment me down in the comment section below that what kind of videos you guys want me to make for you. I would love to read your comment. So अब मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में. तब तक प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्यूटिफुल, स्टे हैप्पी. बाय बाय गाइज.